Hello everybody and a very warm welcome to our podcast series. Doctors Speak with Naturefit. And today, what's the topic that we are going to discuss? It's something we all have been affected by. It's our sleep. And we are here today to find with our distinguished guest what are the natural ways to sleep better. A very warm welcome, Dr. Anisha. Thank you. Okay, so sleep. Let's again look at, what is sleep? What are the things that affect sleep? How we can actually get better sleep? So all of this is coming to you in the next 15 to 20 minutes. So stay with us. Do you ever wonder, waking up in the middle of the night and you think that you've got enough sleep, but it's just 2 a.m. So there are many times we get, broken sleep, we get intermittent, just restlessness. So the studies have actually shown that 93% of Indians are sleep deprived. That's a huge number. 59% of India's population goes to sleep after 11 p.m. and the ideal time for sleeping is actually 10 p.m. to 11 p.m. And I know Akshay Kumar is one of the people who actually sleeps at 9 p.m. and wakes up at 4 a.m. I think उसके अलावा बाकी सबकी sleep में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. तो वही हम आज जानते हैं हमारे distinguished guest Dr. Anisa Shaikh से. Introducing Dr. Anisha, she is a young and passionate homeopath trained under the most affluent and experienced homeopaths. She is founder of Holistic Cure in Chembur and has 4 years of experience in practicing homeopathy. She is part of Prestige Homeopathy Group of Doctors, the HHF Group. She holds a diploma from the prestigious International Academy of Classical Homeopathy located in Greece. So we have an internationally, educated doctor here amongst us. She is a social worker as she conducts health camps in Sri Rampur and some remote areas. COVID-19 awarded as a COVID warrior in 2022. She volunteered and led a team of homeopath doctors at a police marathon in Mumbai and assisted an homeopathic camp at the Mantralaya. She is also a professional graphologist which aids her understanding in pediatric cases. So very warm welcome Dr. Anisha. And here we are, as I just gave an introduction to understand, what are the issues that we are facing in day to day with our sleep and how homeopathy can help in getting better sleep and naturally. So before understanding sleeplessness, let's understand what is sleep because ये बहुत neglected topic है. तो आजकल जब हम लोग रोज भागदौड़ की जिंदगी में इस कंपटीशन वाले एरा में हमें भूल ही गए कि चैन से नींद अच्छे से सोना क्या होता है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि यार 4-5 आवर्स नींद ले लिया काफ़ी है. बट इससे क्या होता है कि हम हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, डिजीजेस बढ़ा रहे हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ओबेसिटी, डिप्रेशन, ये सब ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड जब हम सोते हैं अच्छे से तो हमारी ब्रेन है ना पूरे दिन का इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है. तो कहीं आपने नोटिस किया रहेगा, मतलब मैं से करती थी कि कुछ डिफिकल्ट टॉपिक रहता था ना एग्जाम के समय तो मैं रात को पढ़ के सोती थी सो दैट वो अच्छे से याद रहे. तो इसमें क्या होता है कि हमारा ब्रेन जब ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है हमारी मेमोरी, हमारी क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब बेटर होना चालू हो जाता है. और हमारे जो भी डे टू डे स्ट्रेसेस है ना उसको हमारा कोपिंग मैकेनिज्म भी बेटर होना चालू हो जाता है. तो एंड ऑल्सो अगर आप अच्छे से सो रहे हैं तो जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं ये उन लोग के लिए भी है. एक हार्मोन है लेप्टिन और ग्रेलिन करके हार्मोन है जिसका बैलेंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और ये अच्छे स्लीप के थ्रू ही होता है. सो एंड आपने एक और चीज़ बहुत सटल है, अगर आपने नोटिस करें तो आपने देखा अगर आप रात को नहीं सोए हो तो नेक्स्ट डे क्या होता है, completely restless and there is like slight headache or चिड़चिड़ापन आता है, you're not efficient. Absolutely. and इससे भी आपका ना relations भी थोड़े बिगड़ने चालू होते हैं लोगों को, which I call it as zombie mood. Absolutely. So this was all about sleep. Now we'll talk about insomnia. So insomnia का other medical term is disorder in initiation and maintenance of sleep. That means आपको नींद आने में दिक्कत हो रही है या नींद आने के बाद उसको कंटिन्यू करने में दिक्कत हो रही है. और ये तो बहुत कॉमन है जहाँ पे आप सो तो लेते हो अच्छा खासा 7 to 8 आवर्स, जब आप मॉर्निंग उठते हो ना आपको ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं हुई है. दैट वी कॉल एज नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप. तो ये भी इसका एक पार्ट है.
सो इसके कॉजेस अगर हम जानना चाहते हैं तो ब्रॉडली हम लोग इसको दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में अंडरलाइन डिजीज कंडीशन नहीं होते हैं, सेकेंडरी में अंडरलाइन डिजीज कंडीशन होता है। कोई पेन के चलते रहते हैं, आप सो नहीं पा रहे हो, या कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, या रेस्पिरेशन का इशू है, या कोई डिप्रेशन हो रही है आपको, या कोई ग्रीफ के ब्रेकअप में आजकल हम देखते हैं ब्रेकअप के बाद, या तो फिर व्हेन यू लूज समवन देयर इज अ ग्रीफ, पोस्ट ग्रीफ, तो आप नहीं नींद ले पाते हो अच्छे से। एंड प्राइमरी जहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, तो ये मोस्टली हमारी स्लीपिंग हैबिट्स की वजह से है। इरेगुलर स्लीपिंग हैबिट्स, जैसे कि आप रात को नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, या स्क्रॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये नहीं अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, दिस इज वन। या स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हो आप, जैसे कि कॉफी पीना, चॉकलेट्स खाना, ये सब स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज, इससे क्या हो रहा है, ब्रेन को सिग्नल ही नहीं जा रहा है आपको सोना है। एंड सबसे ज़्यादा जो अभी कॉमन है वर्क शेड्यूल्स, लोग मॉर्निंग इवनिंग नाइट कुछ भी कर रहे हैं, तो रिदम ही नहीं बैठ रहा है। एंड रैपिड टाइम जोन, जेट लैग जिसे हम कहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा ऑफन ट्रैवल करते हैं उन लोगों में बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सो दीज आर द कॉजेस। So I think हम ये चीज़ों से बच भी नहीं सकते, you know, we have to really regulate them because we are all surrounded by so many things. Digitalization is there, sedentary lifestyle is there, become a part of our life. So conscious effort लेना पड़ेगा इसके I know, लिए। so there is actually, you know, kind of a holistic approach that we need to kind of correct all of these things. Okay, so what are some warning signs of sleep deprivation? Like how do I know that I am not getting enough sleep? So there are few signs, जैसे आपको रात में काफ़ी टाइम तक आप जगे हुए हो और आपको नींद नहीं आ रही है, या आपको नींद आने में ही कम्प्लीटली दिक्कत हो रही है, या तो फिर आप सो तो ले रहे हो बट जल्दी सुबह को मॉर्निंग में उठ जा रहे हो, या फिर आप पूरे रात को सो चुके हो लेकिन सुबह उठ के आपको फ्रेश फील नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपका डेली परफॉर्मेंस अफेक्ट होना चालू हो जाता है, आपकी क्रिएटिविटी, जैसे मैंने पहले कहा था, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। एंड समवेयर काफ़ी आपके मूड स्विंग्स भी होने चालू हो जाते हैं। Yeah, and I think this is something involuntary. मुझे पता भी नहीं है, and I become चिड़चिड़, and that is actually because I did not, you know, get good quality sleep or yes, good quality. So अभी next question आपको ऐसा लगेगा कि कितना आज सोना चाहिए इंसान, right. But this is like individual to individual. कहीं 7 to 10 hours भी काफी है, कहीं काफी लोग ऐसे जो 6 hours में ठीक है, काफी लोग ऐसे जो 10 hours में भी ठीक नहीं है, जिसको हम शॉर्ट स्लीपर और लॉन्ग स्लीपर बोलते हैं। तो बेसिकली क्या चाहिए हमको, दैट गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, irrespective of how many hours you sleep, you need to feel fresh in the morning. If you are not feeling fresh, then it's definitely an issue. So I think it's quality over quantity. Yes. And actually वो भी individual to individual. Individual dependent. मेरा मैं कितना physical activity है, क्या मेरा schedule है, it will be completely different. Yes. Okay, so perfect. You know, so warning signs we have kind of understood that how we can understand that. Going forward, now we want to actually understand that how homeopathy, first of all, that individualized treatment approach, which you know homeopathy does marvelously. So how does it apply to sleep disorders? So while we take case, I think sleep, appetite, energy and bowel movements, ये हमारे जनरल पैरामीटर्स है जो utmost important है, जो हम लोग बाय डिफॉल्ट केस टेकिंग में लेते हैं। एंड आपने सुना रहेगा यार होम्योपैथी केस टेकिंग एक घंटा चलती है तो उसमें हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का माइंड, इमोशंस और फिजिकल कंप्लेंट्स सब ही कलेक्ट करते हैं। तो इट्स लाइक पजल के पीसेस है जो हम जोड़ के एक टोटलिटी फॉर्म करते हैं, उस पर हमारा प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रहता है। तो अगर पेशेंट समझो कुछ एसिडिटी से आ रहा है, बट अगर हमको दिख रहा है उसका स्लीप का भी प्रॉब्लम है, तो जब हम मेडिसिन देंगे उसका स्लीप बेटर होना चालू होगा, वी नो दैट उसका एसिडिटी भी ठीक होगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज होलिस्टिक। Yeah, absolutely. I'm sure. And I remember, you know, this is a small joke here that comes to my mind, that one lady actually got offended about the kind of questions homeopathy doctor was asking. And she's like, I have never talked about these things to anybody. So I think that is where the whole approach of, you know, understanding the person, understanding everything about the person before identifying, you know, what's going wrong. So I'm sure if we get that a lot, absolutely. Yeah, and I'm sure you'll be able to identify and rectify the sleep disorders in much better way because you are understanding so many things other than that. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, आप सोते कितने टाइम हो, कभी सोने जाते हो, और सुबह उठ के आपको फ्रेश लगता है कि नहीं। Right. So this is by default. And I don't
don't remember any other doctor who has asked me these questions ever since, whenever we go and they're like directly, okay, ye problem hai, ye. But this is so important to understand. Yes. And, there's a study in Germany which found out that, homeopathy actually 13% of the elderly population was actually recovered from their sleep disorders using homeopathy. Can you suggest some basic sleep hygiene practices? I'm sure, everybody now understands that we require to take care of our sleep, and it is a disorder. It's not a disease, but it's a disorder, and we need to put it into order. So sometimes, people don't, like, I want to sleep, but I am not getting the sleep. Yeah. So what are these basic pre-bedtime things that we can do which can help us sleep better? I think most important before you start is the physical activity. Yes. So I personally have seen that if I have exerted in the day well, if I have done my 1 hour of yoga or my exercise, then I get absolutely sound sleep. So that is one hygiene practice which I've tried to follow. Absolutely, that's very important. I'm glad you mentioned. Yeah. That's very important. And apart from this physical exercise, we need to keep ourselves physically active. I would suggest, पहले तो बहुत basic है, avoid daytime naps. Then avoid processed food. या बेड टाइम के पहले बहुत आजकल ट्रेंड चालू आइसक्रीम खाना, कॉफी पीना या सिगरेट स्मोक करना, शुगर रश, कैफीन रश. यस, ये सबसे ज़्यादा वी गेट मोर स्टिमुलेटेड. दीज आर आवर स्टिमुलेंट्स. अल्कोहल भी बहुत अवॉइड करना है, नहीं करना चाहिए बेड टाइम के पहले. देन स्क्रोलिंग टाइम हमारे जो भी रहते हैं, हम जितना स्क्रोल कर रहे हैं हम लोग उतना एक्टिवेट कर रहे हैं ब्रेन को. तो दैट शुड बी अवॉइडेड एंड स्लीप इन अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जहाँ पे डार्क है, यू आर नॉट इन द नॉइजी एनवायरनमेंट. तो आप इसके लिए आई मास्क यूज़ कर सकते हैं, ब्लाइंड्स यूज़ कर सकते हैं, ईयर प्लग्स यूज़ कर सकते हैं. एंड ट्राई समथिंग मेडिटेटिंग एज एन लिसनिंग टू कामिंग म्यूजिक, या फिर मेडिटेशन करना सोने से पहले, या फिर वार्म वाटर बाथ, reading before bedtime. These are a few tips that a person can do before going to sleep. Absolutely, I think so many of them you have shared, and हम उनमें से और our viewers, even if we start doing 2, 3, and धीरे-धीरे you kind of And also one thing, you need to maintain a sleep schedule. जहाँ पे आप एक टाइम पे सोने जा रहे हो और वही टाइम पे आप उठ रहे हो, ये कंटिन्यूड रहना चाहिए. So I think sleeping is like charging our, जैसे हम अपना फोन को चार्ज कर रहे हैं वैसे हम अपनी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं. और अगर हमारा चार्जिंग प्रॉपर या फुल नहीं है अगले दिन के लिए, so as we just saw that so many issues that come, and it can lead to diseases, it can lead to physical disturbances in our body. So I'm sure that charging needs to be done properly. In fact, there was a study in 18th century जहाँ पे पपीज पे एक्सपेरिमेंट किया गया था. एंड वहाँ पे पता चला था कि अगर पपीज को आप खाना वाना सब बराबर दो बट सोने नहीं दो, तो विद इन लाइक अ वीक और 2 वीक उन लोगों को ब्रेन लीजन्स में, मतलब ब्रेन इंजरी होनी चालू हो गई थी, एंड दोज पपीज डाइड because of lack of sleep. Absolutely, I think it's one of the most important pillars of being, good health. So yes. I think that's absolutely an experiment worth understanding. So now that you've treated so many patients, being a doctor, so can you share one of your success story where we can actually understand that how homeopathy helped? So yes, absolutely. There are many such cases. जैसे मैंने पहले बोला कि sleep by default consider किया जाता है. And I would like to say success story मेरी नहीं है, homeopathy ठीक करता है. I would like to give that credit to homeopathy. So yeah, let's consider a case जहाँ पे हम patient का नाम Z रख देते हैं. So that Z patient came to me, she was around 46-48 years old, and she had married late, around like 38 years old. So she had come with the complaint of severe headache for the last 15 days, not controlled by any analgesics. मतलब painkiller की वजह से भी control नहीं हो रहा था. She had come with that, and on going to मतलब case taking लेने के बाद मुझे समझा कि why the late marriage happened. So I asked her, so she said that I lost my father at 27 years of age, and उसके बाद I was so low ना था कि मैं भूल ही गई कि मुझे शादी करना है, कुछ करना है. सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में उनका वो रह गया खुद का पर्सनल लाइफ. तो तब से उनको स्लीप का भी प्रॉब्लम होना चालू हो गया था. बट सिंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा थी ना कि उस स्लीप के बारे में कुछ सोचा ही नहीं उन्होंने. सो व्हेन आगे मैंने पता किया कि और क्या हो रहा है, तो शी लाइक नाउ अभी ये हेडेक बहुत सिवियर है. किड्स पूछा तो किड्स भी नहीं थे उनको. तो मैं बोला ओके, एंड व्हाट एल्स. तो व्हाट आई कुड सी, शी केम विद अ हेडेक वाला सिम्टम, बट व्हाट आई कुड सी वाज यार ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है.
she's not happy. In spite of having a very loving husband and in-laws, she was not happy. She was not enjoying stuff. वो बोल रही थी सुबह उठ के मुझे ऐसा लग रहा है क्या ही मतलब है जब के and उसके बाउल मूवमेंट्स खराब थे. She was constipated, appetite low था, energy low था. तो this was a whole picture. जबकि patient किसके लिए आया है? Headache के लिए. So when I saw the whole picture and जिस पर मैंने जब उसको medicine दिया, to be very honest, for the initial 1 week उसके headache में कोई change नहीं आया. In fact the headache थोड़ा सा increase हो गया था उसके लिए. बट इसमें क्या हो गया, उसके इमोशंस बेटर होने चालू हो गए, उसकी एनर्जी लेवल बेटर हो गया, उसको भूख लगनी चालू हो गई, बाउल मूवमेंट्स उसके स्मूथ हो गए. एंड उसने मुझे एक चीज़ बोला कि डॉक्टर आजकल ना सुबह उठ के मुझे खुश लग रहा है. एंड उसके हस्बैंड ने मुझे मेंशन किया कि हमारे अभी जो इमोशनल इंटरेक्शन है ना वो बेटर हो गया. तो आप ऐसे क्या दे रहे हो कि ये इतना एक्सप्रेसिव हो रही है करके. एंड देन आई सेड ओके वेट, we'll wait करके. And after a week, after like 5 days more, she called me up and she said there are no more headaches. Great. So this is what homeopathy does. This is what we call as treating from the root. I know. यहाँ पे ऊपर का झाड़ is only headache, but root क्या था? Yeah. So this is like holistic approach that we, you know. Absolutely, and I think that's what we promote on Naturefit also, that you have to understand the person before you understand the disease. Absolutely. So I think those concepts come back again and again, and it's wonderful to see people getting healed. And the best thing I think about this is that that person will be healed forever. They do not need medication all their life, and that is what I think these sciences do, which people need to appreciate more. That okay, they might take initially some time. And it's happening slowly, but they will heal you, at a very late. I spoke to that patient before coming here. I was like, I want to present your case, and it's been 2 years now. Okay. And she's like, no, doctor, I'm doing all well. Emotionally, I'm in a much better place, and they adopted a child also. Wow, so awesome! I think that's what a wonderful way to end our podcast of such a good note. So thank you so much, Dr. Anisha, and thank you viewers for watching the podcast. And hope everybody healthy, happy, naturally. So thank you so much. Thank you so much. It was lovely coming here. And you can consult Dr. Anisha. She is practicing in Chembur. She has a clinic there. We will share her profile link in the description, and you can consult her online as well. So what are you waiting for? Consult her now. Yeah. Thank you so much.